ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट क्लिनिक। आपके साथ हमेशा की तरह आसिफ, अ, मुदस्सिर और मैं साइम हाजिर हैं। और ये जो फर्स्ट हमारी एपिसोड है, इसमें हम जो हमारी अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है अफगानिस्तान सीरीज, उसके बारे में एक बर्ड्स आई व्यू लेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे कि हमारे ओपिनियन में क्या की टेक अवेज हैं, क्या हमने इस सीरीज से गेन किया, क्या क्वेश्चन मार्क्स हैं जो अभी तक रिमेन करते हैं ऑन, और ओवरऑल ये सीरीज लीडिंग अप टू द एशिया कप और वर्ल्ड कप हमें कितना फायदा देगी। सो स्टार्ट करते हैं। आसिफ, आप स्टार्ट करो और आप हमें अपनी जस्ट गिव अस योर टेक ऑन द ओवरऑल सीरीज. What did you find were sort of the key positive? Of course, it was a in terms of the score line, we couldn't have hoped for a better score line 3-0. But overall, क्या आप feel करते हैं positives and any shortcoming that you see? Okay. Assalamu alaikum, Bhayo Beno, everyone in between. Look, I'm this season coming up now. I think we have to take a bird's eye view, and there's one key concept that I think we need to understand: perspective. Yeah, perspective, right? We need to understand there's a lot of cricket coming up in the next 4 months, many matches. There's going to be a roller coaster, ups and downs. We have two goals as far as I'm concerned: the World Cup and then the Test series in Australia. Now, the Test series is at the end of the year, so we can worry about that later. But every single match, every single series, every single quote, every single incident has to be viewed through the lens of how is this going to affect our World Cup preparation? Does it help us? If so, how? If it doesn't help us, what do we learn from it? We have a very passionate fan base, alhamdulillah, which is great, but we have a very reactive fan base. And so you have to understand, never too high after a win, never too low after a loss. And, Agha Salman has a bad match, and then they say, why is he here? Get him out. Babar gets out cheaply. They say you can't play spin. No, you have to take a very academic view of things, look at trends, and understand that we all have the same goal here. You have to have a very deliberate, methodical approach to this. It's all about the World Cup. So with that in mind, I think just that the very first thing coming out of the Afghanistan series is we won 3-0. We came out unscathed because, we lost a T20 series to them. They had their confidence up. Our big excuse was we had a backup team. Now this is our full strength team. Coming out 3-0 was very, very important for us because, it's not just what you do on the field, it's your mental approach. Had we lost, I think it would have hit us a lot mentally. So that's one thing. There are many details you can go over, but one thing which I will say again and again and again, because all of us, we've been fans for 30 plus years. One thing which we have never, ever seen with the Pakistan cricket team, the fielding, the catching has been absolutely top notch. You look at Afghanistan and how many chances they missed throughout the match. That's what we were just a few years ago. I don't know if it's a coaching, I don't know if it's a personnel or the mindset. I don't know what it is, but normal, spectacular catches are being taken, and it's routine from everyone, from Fakhr to Imam to Agha Salman. Everyone is taking catches, and it's Shadab is, you thought we lost Shan Masood, we lost our best fielder. In comes Shadab, we don't miss a beat. Ground fielding, direct throws, everything. That is such a huge thing that's what wins matches. You have to take your half chances, half opportunities. Pakistan is doing that. दूसरी चीज ये कि जो है, you're working out your personnel, you're tinkering with the lineup. I know we'll talk about that earlier. I think it was a very reasonable approach to say, let's see this Osama Mir, let's see what he's about. And they gave him a good shot. They gave him a good approach. Fine, he didn't score much, but it was the way he approached things. I think his mindset was a little bit immature, and I think it's very clear now that Nawaz is your number one option there. Osama has been tried. He'll have a great future, hopefully in the future, inshallah. But this is what we have. We've tinkered with that. We found it. Remember, especially with the batting that he brings in, right? Bilkul. Remember, a little over a year ago, we were sitting here. What were we saying? Middle order. We were talking about Haider Ali and Asif Ali, and then we were talking about Shah. Yeah. So we have got now Agha Salman and Iftikhar, who, again, never too high, never too low. Iftikhar had one horrible maiden over in the World Cup final, but overall, you look at his body of work, he has shown he can come in, he can build in partnership, he can hit when it's needed. This is despite the fact that they have tinkered with him with his position in the lineup. He should be much higher up, but they've messed with him completely. Agha Salman, again, look, we criticize selectors all the time. They need a lot of credit for finding this guy when none of us had him on our radar. From bowling, fielding, attitude, batting perspective, this guy has he's marked all the checkpoints that we need. Many other things as well. Our pacers, we have a good lineup of pacers. Our backup pacers look good. When you introduce, Wasim Jr. and
Fahim Fahim Ashraf Ashraf. team, the batting becomes so much deeper. So we've got some depth there. I would still like to see Zaman in there. I don't know if he can ever get in there, but that's baat ki baat. Rizwan was a big question mark coming into this series. I think maybe his position in the lineup is not fixed, but the fact that he belongs there, the fact that he can build a partnership and close for you is important. And the last thing I would mention is Rashid Khan. He was an enigma for us. He is an enigma for us. He has been an Achilles heel for Pakistan, and he showed some chinks in the armor there. And I think that gives us a lot of confidence going up against them in the Asia Cup, and of course, especially in the World Cup. We can play out his overs. We can score off of him. He is not a machine. He will bowl bad balls over the course of 10 overs. He doesn't necessarily do over 4 overs, but over 10 overs, he'll bowl down the leg side. He'll make mistakes, and we can sit there. And it's a lot easier to make up 40 overs than it is 16 overs. So a lot of positives, I think, going in. You could not have asked for a better thing. We had a tough match, a close match, which I know you'll talk about. Coming out on top in that, another big deal. Alhamdulillah, I think we're very well poised for the Asia Cup and for the World Cup. Yeah, I think about the Rashid point, I think the more we play him, the more we're going to get accustomed and used to his action and the kind of variety he brings in. तो PSL में भी हमें उसका exposure था. अब T20 सीरीज खेली है, and I think you were right कि हमने उसको just sensibly उसको खेला है, play out किया है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर attack नहीं किया. जहां जरूरत पड़ी वहां अटैक भी किया, but rash shots नहीं खेली, and we attacked the other bowlers, which helped us. मुदस्सिर, आप ऐड करोगे इस डिस्कशन में कि ओवरऑल क्या क्या कुछ और हमारे पॉजिटिव या कुछ शॉर्ट कमिंग्स जो हैं जो रह गई हैं आफ्टर द अफगानिस्तान सीरीज? आई थिंक ओवरऑल तो काफी अच्छी सीरीज थी, काफी क्लैरिटी आई है. मुझसे अगर आप देखो, आसमा ने हैज कवर्ड मोस्ट ऑफ द स्टफ. आई थिंक 9-10 बंदे तो टीम के हमें समझ आ रहे थे. डिबेट की जगह भी नहीं है. इनफैक्ट एक आध पोजीशन पे ठीक है, इतना तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है. आई थिंक टॉप 3 भी ठीक है. ये आसिफ भाई जो कह रहे हैं ना, आगा सलमान और इफ्तिखार, आई थिंक ये बड़ी मुश्किल से प्लेयर्स थोड़े लग रहा है, इनका शेप आया है टीम बैटिंग लाइनअप में, तो इनको अंदर बाहर नहीं करना चाहिए. और आई थिंक दोनों ही मेरे ख्याल से काफी अरसे बाद बैक टू बैक सेट हो गए प्लेयर्स. और बॉलिंग हमें पता ही था कि तीनों अगर साथ खेलें, शाहीन, नसीम और हारिस, तो टीम जस्ट गेट्स एलिवेटेड. और वही उसामा मीर का एक्सपेरिमेंट अच्छा था. आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ क्रिकेट और लॉट ऑफ गेम्स कमिंग अप, तो बैकअप पे कोई ना कोई तो होना चाहिए. तो आई थिंक स्क्वाड में उसामा मीर को रख सकते हैं, मगर शादाब प्लेइंग 11 में शायद जगह ना बने. हाँ, अच्छा, प्लेइंग लाइन में नहीं बनेगी, पर बैकअप में ठीक है. राइट. नहीं, आप दोनों ने you summarized the positives. What about a few key sort of shortcomings, limitations? एक तो फखर जमान का फॉर्म, अनफॉर्चुनेटली इससे पहले LPL भी वो खेला है, didn't score much. We were hoping he'll get one good score. He had starts, but couldn't materialize that. Hopefully एशिया कप में उसको मौका मिलेगा. कल नेपाल की गेम है, होपफुली स्कोर्स दे. तो एक थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क क्या फील करेंगे ओपनिंग के अंदर. आई एम नॉट सजेस्टिंग बाय एनी मींस के उसको चेंज करना चाहिए, बट ही इज अ की प्लेयर फॉर अस. बिकॉज बाकी अगर आप देखें, फखर के अलावा इमाम को देख लें, इवन बाबर को देख लें, रिजवान को देख लें, अगर साउथ शकील आता है तो उसको देख लें, उनकी स्ट्राइक रेट नहीं है, राइट. सो दे सॉर्ट ऑफ गुड सॉलिड प्लेयर्स, बट फखर इज वन प्लेयर जो कि हमें अपसाइड पोटेंशियल देता है. सो अनफॉर्चुनेटली वो अपसाइड पोटेंशियल हमें किसी गेम में भी नहीं मिल सका, नंबर 1. और नंबर 2, वो जो मिडिल ऑर्डर की बात है, येस आई डू अग्री कि विद इफ्तिखार एंड विद द लाइक्स ऑफ आगा सलमान कुछ हद तक हमने उसको इम्प्रूव किया है. बट फिर भी अगर आप देखें तो ऑल 3 गेम्स वी डिड सफर कोलैप्सेस. आई मीन फर्स्ट गेम में तो वी बेयरली मेड 200. सेकेंड गेम के अंदर एट वन स्टेज वी वर क्रूजिंग, but then it required the heroics of Naseem Shah and Shadab towards the end to rescue us. And then third game के अंदर भी एक स्टेज के अंदर हमने 3-4 बहुत क्विकली विकेट्स लूज कर दी, कुछ रनआउट्स की वजह से, कुछ और वजह से. And then it required one good partnership from Nawaz and who was the other guy? नवाज के साथ दूसरी किसकी पार्टनरशिप हुई थी? सलमान के साथ, आगा सलमान. सो इन दोनों ने फिर हमें रेस्क्यू किया. सो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जो एक हमारे अभी भी अनफॉर्चुनेटली जो कोलैप्सेस हो रहे हैं, उसका कोई सोल्यूशन है, या
सो इन 2 पॉइंट्स के बारे में अगर आप कोई रोशनी डालना चाहे। यार आई डिसएग्री, जो लोग कह रहे हैं ना कि फखर ही गॉट हिज स्टार्ट्स यार लो स्कोरिंग गेम्स में, एक आपको क्विक 30 भी मिल जाए तो इट डज मेक अ बिग डिफरेंस कि आपके 10 ओवर में 30 रन हो, ऊपर से कोई आउट भी हो जाए। तो आई थिंक ही गॉट सम स्टार्ट्स, ही कुडंट गॉट इट कन्वर्टेड। थोड़ा है आप फॉर्म, मगर आई थिंक फखर इंटेग्रल पार्ट है हमारी टीम का, क्योंकि अब जाके कुछ वो जो आपका इमाम उल हक है, उस पर बहुत क्रिटिसिज्म था शुरू से कि उसका स्ट्राइक रेट 80s में रहता है, इवन पावर प्ले में भी उसका बहुत लो था। मगर रिसेंटली जो टेस्ट अभी सीरीज हुई है उसमें जो उसकी फॉर्म है, मतलब ही लुक्स लाइक ही इज द बेस्ट बैट्समैन फॉर स्पिनर्स इन आवर टीम। टेस्ट उसने बचाया, तो इमाम फाइनली सीम्स टू बी इम्प्रूविंग, और उसका आई थिंक स्ट्राइक रेट भी थोड़ा ऊपर आ रहा है। इवन इफ ही प्लेज 90-95 इट्स ओके। तो फखर से ये होता है कि आपको एक डिफरेंट आपको एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि हो ये रहा था इमाम था, फिर बाबर और रिजवान, ये तीनों। बाबर तो खैर ठीक है, इसका लास्ट 20 में इसका 90 स्ट्राइक रेट है, तो आई थिंक ही हैज इम्प्रूव्ड ऑलरेडी। रिजवान और इमाम पे क्वेश्चन मार्क था मुझे कि कैन दे एक्सेलरेट लेटर, तो इमाम सीम्स टू बी इम्प्रूविंग, रिजवान की लास्ट इनिंग ठीक थी। तो आई थिंक फखर पे मुझे तो कोई रिग्रेट नहीं है। यू हैव टू, कोई रिजर्वेशन नहीं है, यू हैव टू हैव एन ओपनर। हर टीम में होता है, और अगर अब फखर को निकाले किसको खिलाएंगे आप? एक और आप अब्दुल्ला शफीक से करा देंगे तो वही क्या फायदा फिर? बैटिंग आपकी, यू बैट सो डीप, तो यू नीड टू टेक चांस ऑन द अदर एंड। सो मेरा नहीं ख्याल कि फखर नहीं, अभी अभी तो वैसे भी इट्स टू लेट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। एक सेटल्ड हमें एक बैटिंग ऑर्डर मिल रहा है, बट आई जस्ट होप कि उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है एक लंबी इनिंग के बाद की वजह से जो उसको कुछ। I actually see disagree a little bit with both things. कि जो है, you remember about a year ago with the Asia Cup when Fakhr was out of form, woefully out of form, and you see the difference between then and now is that at that time he couldn't even hit bat to ball. He was completely discombobulated, disoriented. He looked like he did not belong on the field. Right now, he's timing it well. He's hitting good shots. He's just getting out. He's getting starts but not building. So I agree with Saimke. He should get, we would like to have one big score, but I'm not worried about his form. I'm not worried about his where he is mentally. Last year we were worried about that. And even with his semi-low scores, which they have been low, we've been getting reasonably good starts. We're not having the old Pakistan of 20 for 4 or things like that. He's and Jo Imam ka hai, which is true. Look, Imam is a very integral part of this team, but the strike rate is something to look at. In this last match, even Fakhr had scored, I think, 27 and 30 balls. At that point, when Fakhr got out, Imam had a strike rate of around 40%. I mean, he started very slow, and these are difficult pitches, so that's fine. But I think Fakhr feels the pressure. Okay, I have to keep the scoreboard ticking when Imam gets set, and there's nothing wrong with that. I think that's fine. So yeah, I would ideally like to have seen Fakhr get a big score, but I think given how difficult these pitches are, the ball was swinging. These are low-scoring matches. These are difficult pitches. Fakhr did okay. I mean, and as we get to better pitches, maybe not in this Asia Cup in Sri Lanka, once we go to the World Cup, when you get these flat pitches where Pakistan's going to be playing in India, Fakhr hopefully will come true, because he's mentally there. He's not making the fielding lapses, which he did in the Asia Cup. He's hitting the shots. But yeah, a good score would obviously help, but I'm not too worried about the opening. Yeah, and it typically comes good in important games, knockout games. और I think ये pitches ना suit नहीं करती फखर का. I think he likes ball on the bat flat. He plays like really good outside Pakistan, South Africa. जो तेज पिचे होती है, फखर is a good player. न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड में बड़ा स्कोर किया हुआ उसने. तो फखर is a good player. वो असल में, और यही हम लोग मजाक करते हैं कि चाचा का भी ये तो लगता है कि he plays the best. उसकी had 250s, और जो जिस तरह बल्ले पे इन दोनों की आती थी स्ट्रोक प्लेयर्स ना. अब ये जो एशिया का खास तौर पे जो श्रीलंकन पिचेस है ना, ये सब को हमें नहीं, इट विल बी लो स्कोरिंग टूर्नामेंट, एंड होपफुली it will go into your advantage. Right. नहीं चलें, the Nepal game is coming up as we speak, so hopefully that might be sort of the launching, I mean, not a launching pad, but something which sort of gets him back into, hitting half centuries or century, and then taking it from there. अच्छा, एक चीज जिसने हमें obviously काफी लोगों ने इस पे बात भी की,
कि the whole series was being played, with good sportsman spirit, एक अच्छे spirit के साथ, बहुत एक friendly atmosphere था. But towards the end, जिस तरह जो second game के अंदर जो मैच एंड हुआ, उसमें थोड़ी बदमजगी हो गई. एक तो जो नो बॉल इंसिडेंट हुआ, उसमें आप खैर अफगानिस्तान प्लेयर्स को ब्लेम नहीं कर सकते. दैट्स अ सेपरेट डिबेट के परहैप्स इस तरह के क्लोज उस चीज के अंदर. आई वंडर व्हाई दे आर नॉट ओपन टू जस्ट रिव्यूइंग और लुकिंग एट द रीप्ले. आई मीन रिप्ले ले लें, आधा मिनट मिनट के अंदर आपकी चीज पता चल जाएगी. तो वो एक सेपरेट चीज है. बट वो जो रन आउट इंसिडेंट हुआ, मनकद इंसिडेंट, जिसको आप आईसीसी कहती है कि जिसको मनकद ना कहें बिकॉज उसका एक नेगेटिव परसेप्शन है, उसके अंदर भी आई नो देयर टू स्कूल्स ऑफ थॉट. एक लोग कहते हैं कि जी ठीक है जी, लीगल है तो ठीक है. बट देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट विच आई बिलोंग टू, विच फील के नहीं, लीगल बेशक होगा लेकिन दिस डजंट सीम राइट. दिस सीम्स कनिंग, दिस सीम्स अनस्पोर्ट्समैनली. तो उसके बारे में क्या आप लोगों की राय है अबाउट दैट, स्पेशली द मनकद इंसिडेंट? यार अब ये काफी बुरा ट्रेंड शुरू हो गया है. मैं इसको कहता हूँ, ये वायरस की तरह ये चल रहा है आजकल, कि लोग बगैर वार्निंग के आउट कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स रॉन्ग. क्रिकेट थोड़ी हमने भी खेली हुई है और अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट. आई एम फाइन कि कोई वार्न करे, उसके बाद अगर कोई कर रहा हो प्लेयर तो देन इट्स ओके. मगर बगैर वार्निंग के बेवकूफ़ों की तरह ये लोग आउट करें, ये तो हम लोग गली मोहल्ले में भी नहीं करते ना. अभी विमेंस में हुआ है, फिर जैम्पर अटेम्प्ट की, फिर इट्स अ लॉन्ग लिस्ट. सो इट्स या नॉट अ, दीप्ति शर्मा ने इंडिया की तरफ से किया था. अब वो मैं लेना नहीं चाह रहा था, मगर ये वो सबको पता है कि शुरू कहाँ से होता है ये. तो हम्म. इसको आई थिंक इट नीड्स टू स्टॉप. ये इट्स नॉट अ गुड ट्रेंड. अच्छा, So आसिफ आपकी क्या टेक? I will say, so first of all, just a brief thing. If you look at international cricket, full member teams, how many times it's been done? And I'm just going to say this and leave it. India has done it 3 times, hence the name Afghan. Okay. Australia has done it twice. New Zealand has done it twice. Sri Lanka twice. Afghanistan once. West Indies once. Countries that have never done it: Bangladesh, England, Ireland, Pakistan, South Africa, Zimbabwe. I'll just leave that there. You draw your own conclusion. One thing I will say, because obviously, look, it's allowed, it's legal, it's against the spirit of the game. Courtney Walsh did that with Abdul Qadir. He let him go in the 1987 World Cup. He would rather have lost that game than won it that way. I would rather lose the World Cup than win it by doing that, but that's just me. The bottom line for me, though, I say still this is a positive. Why? Because you tend to become complacent against member teams. You know, Afghanistan, we've seen them a lot. We're going to see them in the Asia Cup. We're going to see them in the World Cup. If ever Pakistan needed motivation to make sure that we not just beat Afghanistan, but throw them to the ground and step on their necks and destroy them, this is it. Shaheen Shah Afridi was very upset. I've never seen Babar Azam that animated before. The Afghans know that because they actually dropped one of the players who was arguing with our guys after this. So this is motivating us. This has lit a fire under us. And they just need to remember this. Every time we see Afghanistan on the field, remember that, use that as motivation. It's something that at the end of the day, in a match that wasn't that important, is going to serve as a very big rallying point for us in future. Yeah, and not just a rallying point, but a reminder कि ये चीजें आप बेशक करें ना करें, बाकी लोग कर सकते हैं. So be careful of this. मैं इसको इसलिए भी थोड़ा सा अनएथिकल समझता हूँ कि आप उसको मैं एनालॉजी ये देता हूँ कि आपने देखा होगा पाकिस्तान में जिस तरह सड़क के ऊपर गाड़ी जा रही होती है, राइट, एंड पीपल आर वेटिंग टू क्रॉस, राइट. सो वो एस्टिमेट कर रहे होते हैं कि गाड़ी स्पीड से जा रही है, रश है, जैसे ही गाड़ी जाएगी मैं क्रॉस कर लूँ, राइट. सो देव एस्टिमेटेड द स्पीड ऑफ द कार टू प्लान कि थोड़ा सा मेरे पास टाइम है और मैंने रश करना. सो अगर मैं उसको एनालॉजी को यहाँ पे देखूं, एक नॉन स्ट्राइकर ने एस्टिमेट किया होता है कि आप भाग के आ रहे हो और इस स्टेज के ऊपर आप डिलीवर कर दोगे, अब मैं भाग पड़ूंगा. अब अगर आखिरी सेकंड के अंदर आप ब्रेकें लगा देते हो, राइट, यू आर गोइंग एट एक नॉर्मल पेस से जा रहे हो और आपने माइंड बनाया हुआ है कि जी मैंने इसको बनकर करना है, और आखिरी सेकंड के अंदर आप ब्रेकें लगा के उस बंदे को कर देते हो, तो यू बेसिकली यू बीइंग कनिंग. सो But you आर are दे using रिवॉर्डिंग the rule. पीपल? You are using the rule. You're still using the rules to your advantage. So a quick analogy in basketball, they see this a lot where the point guard is running full speed and the defender's coming behind him. He stops, gets bumped, gets a foul and free throws. Not the most admirable way to score, but it's very legal and seems less poor sportsmanship in that situation. Monk in itself is, but I will say this: you did not see Shady Bhai get upset.
You know, Yeah, he just left. He left he knew it, immediately. and he, I think, in his mind, blamed himself because Yeah, he knew yeah, this is the rules. At this level, you have to be ready for anything. yeah, yeah. चलें जी, इसके साथ ही हम इस एपिसोड को रैप अप करते हैं। ये हमारी एपिसोड थी अफगानिस्तान सीरीज के बारे में। एंड एज द पैनलिस्ट, होपफुली ये जो हमारी लर्निंग्स हैं और जो हम एक अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में चल पड़े हैं, और जो हमने क्वेश्चन मार्क्स आंसर कर दिए, स्पेशली हमारे मिडिल ऑर्डर, हमारी कॉम्बिनेशन के हवाले से, दे विल हेल्प अस मूविंग फॉरवर्ड। जिस तरह के आसिफ ने भी कहा कि the goal is the World Cup, Asia Cup, of course, but Asia Cup is also a means to an end. The big prize is the World Cup. So hopefully this experience will help us. So इसके साथ ही thank you very much. Allah Hafiz.